कि दिस लाइब्रेरी विल आल्सो बी अनइंस्टॉल्ड, और आप उनको अनचेक कर देंगे, और अनचेक करने के बाद आप ये मार्क ऑल अपग्रेड कर देंगे और फिर अप्लाई कर देंगे, एंड देन ऑटोमेटिकली वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इजी वे है, ठीक है। ओके सर। और दूसरा मैंने बताया सॉफ्टवेयर सेंटर में मेरे में अभी टाइम ले रहा है, बट यहाँ पे आपको माइस्क्वेल दिखाने लग जाएगा, तो वहां भी आपको ऑप्शन देगा अनइंस्टॉल करने का, तो वहां से भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सिमिलरली कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। sudo apt जो है ना, sudo apt get and remove और माइस्क्वेल, ठीक है, तो वहां से भी रिमूव हो जाएगा। एग्जैक्ट कमांड आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, थोड़ा बहुत स्पेस हाइपन और ये सबका वो टाइटल प्रॉपर लिखना होता है ना। तो ओके कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप कर सकते हो, लेकिन जो सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर है वो उससे सबसे आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो उसमें अपने ओके आप सारी लाइब्रेरीज हैं, इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज, दे विल बी अनइंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली। ओके ओके, ओके। एनीथिंग एल्स? नो सर। चलिए, so let's come back. So as I told you that once you will type this command on your MySQL prompt, it will ask you for root password, root user password. So root user password आप दे देंगे, and then you will see MySQL prompt, and now you need to create a account for you. Okay. So generally it is always a good practice कि आप root account के साथ regular work नहीं करेंगे, because that is account is a account that is having all kind of powerful account होता है, हर सारी privileges होती हैं। We will root account नहीं करना है, you just need to create account, separate create command. Let's see. Okay, now it is important to remember that create user command is a command that requires root level privileges. Okay, so जनरली आप किसी भी अकाउंट से इस कमांड को इशू नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले आप रूट से लॉग इन कर लीजिए, and once you log in through the root account, you can issue this command root level, because this account root having root level privileges. root level privilege मतलब all privileges you can say, ठीक है। अभी आप privilege के बारे में कुछ नहीं जानते, so don't worry about that, what are the meaning of privileges, we will talk about them later. So you just need to write create user, and then you need to provide the name of the user. So I have just taken name Ravi. Okay, now this at localhost is optional. Okay, at localhost is optional. Okay, why I have written it? Actually, you just need to write here, if suppose your server is installed on some remote machine. Okay, if your server is installed on some remote machine, then after at symbol you need to provide the IP address of the server or domain name of the server. Okay, or machine name. Actually, every server having a machine name, so generally machine name are hidden, so either you can get the IP address of that machine, or you can use the domain name whatever available. So that is for this. For local machines, this is also optional, since in your case when you are doing practical on your machine, so your MySQL server is installed on your machine itself, so all these things are optional. Only just you need to write Ravi, which if you are using Ravi as a account name. Okay, then a space, then you need to provide password identified by. These are the keywords. आपको ऐसे ही लिखना है, इन दोनों के बीच में स्पेस है, ध्यान रखना है. Remember there is a space between both of them. Identified by, and then in quote you need to provide the password. Okay, so whatever password you want to use, you can specify a password within single quotes, and terminate the line with semicolon and enter. Okay, and then you will get a message like user created. Okay, like let me show you how to create a user. Create user, let's say Ashok, identified by, let me give the password 123. Okay. So user is created, so you will get this kind of message, query okay, 0 row affected. सर अदर यानी जितना यूजर बनाएंगे उसके लिए सर अलग अलग पासवर्ड डालनी पड़ेगी सर?
हाँ, सेम पासवर्ड भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। पासवर्ड जो है ना मशीन जो लिनक्स है, लिनक्स और एनी जनरली डेटाबेस एप्लीकेशंस डजंट स्टोर password in normal text. They store your password in hash form of a hash value. Okay, so password mein there is no issue. Two different account can have same password. There is no issue. But username should be unique. Okay, remember that. Okay, sir. Two users cannot have same name. Okay, two users cannot have same username. Password can be same for two different users, but their name should be different. So this is how you will create an account. So once you are done, you will get this kind of message. If it may be the case that you may get different kind of message or some error message, and that error message may be due to using wrong syntax in your command, or it may be possible that you have correct syntax, but you don't have the privileges to issue this command. Okay, so it may be the case that you maybe you forgot to log in by root user. आपने कोई एक अकाउंट बना रखा है एंड उस अकाउंट के पास क्रिएट यूजर की प्रिविलेज नहीं है, एंड यू आर एग्जीक्यूटिंग और यू आर issuing a create user command. So in that case you will get an error message because you don't have privilege to do that task. Okay, so create user command को issue करने के लिए root level privilege required होती है. Okay, so in my case, I have created this username with name Nemi, and this user I have given this user उनके बारे में later बात करेंगे. Okay, so for the time being, since you want to do practical, so you require root level privilege. आपको tables भी create करना है, table destroy भी करना है, tables का data भी you would like to manipulate the tables data, so you will require root level privilege. So it will be a good idea that you create an account with root level privilege. Okay, so I will tell you how to create account with root level privilege. Okay, so now I'm going to give this user account Ravi all the privileges that are equivalent to root level. Okay, administrative level. So the command is grant is a command to issue privileges. Okay, privileges को कैसे issue करना है, specific privilege देना है, वो हम बाद में बात करेंगे डिटेल्स में. For the time being आपको इतना ही करना है. You can note down these commands as well. Okay, if you are you may not remember all these commands, so you can write down these syntax, or you can take the screenshot if you are accessing this through mobile or machine, that if you can take. Okay, so grant all. Notice the difference. Grant and so notice the space between both of these commands. Grant all. Both are keywords. So you need to write them as it is. Then privileges. You also need to write as it is. Then space on. Star dot star. Star dot star means कंप्यूटर साइंस के लोग जानते होंगे स्टार डॉट स्टार का मतलब क्या होता है ना. स्टार डॉट स्टार फाइल सर्चिंग में आप इस्तेमाल करते हो, वो वहां Slope, से sir. मीनिंग अलग है. So star dot star means you want to give all the privileges on every data item or every object in the database. So star dot star का मतलब सारी privilege हम देना चाहते हैं. किसको? To, again this is a keyword. ध्यान रखना इनके बीच में स्पेस होना है. Then user name, account name, जिस यूजर अकाउंट को आप privilege देना चाहते हैं. So let's say I want to give these privilege to Ravi. Okay, नाउ आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, रवि के बाद सेमीकोलन लगा करके एंटर कर देंगे, देन भी आपको अकाउंट को रूट लेवल प्रिविलेज मिल जाएगी. लेकिन आपका जो ये जो अकाउंट है रवि, ये किसी और को प्रिविलेज नहीं दे पाएगा. अब इफ यू वांट दैट आई वांट टू क्रिएट ए यूजर अकाउंट दैट कैन आल्सो बी एबल टू गिव द प्रिविलेजेस व्हाटएवर दैट यूजर हैव टू अदर यूजर्स आल्सो. मतलब जो प्रिविलेज आपके पास है आप किसी और को देने की भी कैपेबिलिटी चाहते हैं, तो आप लिखेंगे विद ग्रांट ऑप्शन. ओके, दिस इज ऑप्शनल, यू मे नॉट रिक्वायर इट. अगर आप चाहते हैं कि विद दिस अकाउंट, दैट मीन्स अकाउंट नेम रवि, आई वांट टू गिव आई और आई may require or I would like to give privilege to other accounts also, then you can execute this command with grant option. Okay,
So with grant option means whatever privilege Ravi has, Ravi will be able to give all the privilege or selective set of privileges to other accounts also, other users also. Okay, so that is more powerful account actually. So it will be a गुड आइडिया कि आप जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं एग्जैक्टली इसी तरीके से करें. यूजर नेम आपका कुछ जो भी हो वो आप ले लेंगे, चूज कर लेंगे, दैट्स अप टू यू, बट यू जस्ट नीड टू रन दिस कमांड. And again, you will not get any error message if you have this privileges to do that, और आपने correct syntax लिखी है. So I'm not let's do it, or let's issue all the commands to Ashok also. Grant all privileges privileges on star to Ashok. ASH Ashok, with grant option. Let me check it. I have typed it. Gopal privilege on star to Ravi with grant option. Okay. Okay. So semicolon. Okay. So I didn't get any error message. That means my query was successfully executed. Okay. So now this command has been accepted. So that means you have given the privilege to this account. So need to make them permanent. Why just okay? So इससे क्या होगा? These updates will be saved into the database. This is also necessary. नहीं तो privilege assign नहीं होंगे. First, privileges. Okay, done. So now Ashok account has, I have created an account with the username Ashok, and this account have all the administrative level privileges, and this account can also give privileges to other account. Okay, got it? So this is how you will create a account with administrative level privileges with grant option as well. Okay, so this task you will do in your machine. जब आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे रूट यूजर से, ये सबसे पहला टास्क आपको करना है. Now this is the command that can be used to update the password, like update user. This is the command to update a user. Update user, set password. These are the keywords equal to. Then this is a kind of function, kind of structure. Password, within bracket you will write the password. Okay, so here I have written new password. So new password means whatever password you want to issue. So अभी मैंने password दिया था, let's say 123. You want to update this password, you can provide the password here, where user equal to Ravi. So in this way you will be able to update the password of the user. So I think that is very easy. You will do it automatically. Okay, मुझे इसको repeat या करके दिखाने की जरूरत नहीं है. And then again ये command आपको reissue करना है, first privileges. Okay, and now one more thing. मैनी टाइम्स क्या होता है माइस्क्यूएल में, जो कमांड्स आपने इशू की है, आप चाहते हैं कि पिछली कमांड को मैं दोबारा से इशू करना चाहता हूं, तो आप जो अप पेज अप की है उसे प्रेस कर सकते हैं. पेज अप पेज डाउन की से आप पिछली कमांड्स जो आपने इशू की थी उनको देख करके इशू कर सकते हो. ठीक है, जैसे सो डेटाबेसेस. मैंने पहले प्रीवियसली ये कमांड इशू कर रही हूँ. माइस्क्यूएल रिमेंबर योर प्रीवियस कमांड्स दैट यू हैव इशूड. ओके, सो उन कमांड्स के बीच में नेविगेट करने के लिए आप पेज अप कमांड जो है उसे यूज कर सकते हैं. पेज अप जो की है, यू कैन यूज दिस पेज अप की. ओके, तो जो आपने पहले कमांड इशू की होंगी उनको आप फिर से री इशू कर सकते हैं. ठीक है, पेज अप पेज डाउन से आप नेविगेशन कर सकते हैं. सो दीज टू कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेज अप पेज डाउन. Okay, now did you notice I have issued one more command here for you, so you can note it down. In order to show whatever data, what databases you already have in your MySQL install server,
you can see all the list of those databases using show databases command. Okay, let me repeat again. If you want to see what databases are already there in my database server, मेरे database server में कौन कौन से database पहले से बने हुए हैं, you want to see the list of all those servers, so you just need to issue command show databases. Okay, show databases, and then you will see list of those databases. So I have these databases. There are some databases that are already created by MySQL itself. So वो MySQL से related databases हैं, like information schema, MySQL, performance schema, sys. All these are the system databases. These are the databases that I have not created. When you will issue command, you will also see these databases in your machine. ये automatically created databases हैं. Got it? And these are the databases that I have created in my machine. Okay, मेरे database server पर ये databases मैंने create किए हुए हैं. Okay, so when you will issue this command show databases, you will see the list of all the databases. Got it? Now one more thing, if you want to see all the grants that have been issued or all the privileges that have been given to a user, you can use this command. So let's say show grants for Ravi. अच्छा रवि तो है नहीं है इसमें. show grants for Ashok. Sorry, I forgot to. So these are the list of grants. You may not be able to understand what is the meaning, like grant, select, insert, update. All these amount grants are there. ठीक है. So इनका अभी आपको meaning नहीं पता है. So don't worry about that. What are level privilege or root level privileges. So that's why you are seeing a long list of grants to the user. Okay. Or this is not the command for clear. Any question till now, till date? Now, this command I have already discussed. So if you want to see existing databases, you just need to write show databases. Okay. Again, this is a command that requires some administrative level privileges. So maybe अगर आपके account के पास privilege नहीं है, you may not be able to execute this command. And when you issue this command, you may see some error message where insufficient privileges kind of information will be there. Now we will discuss this command later. Let me just tell you what this command is for. This command is for creating a database. So if you want to create a database in your machine, you can use this command, create database name. Like suppose I just want to create a database, create database, let's say CUSP. Just write this and enter. Okay, there is no error message. I am getting query, okay, one row affected. That means my database has been created. Now I can see whether I can confirm that if database is created or not. So just you need to write reissue the command show databases. So now you see this command this database name CUSP is there. Okay, so this is how you can create a database. Okay, now this database doesn't have a table. There is no tables. We have created just a database that is empty one. Okay, now one more thing you should remember, when you create a database, you will get automatically all the privileges on this database. So आप इस database में you can within this database you can add tables, you can remove tables, you can update tables, you can insert the data, you can modify the data and so on. So all the privileges on this data you have got. You can also delete drop this database from your database server. ठीक है, आप इसे हटा भी सकते हैं. So all the privilege you will get. Now one more thing, since your database server may have multiple databases, okay, and now you may decide that I would like to work this particular database. Let's say
I want to work with database, let's say Twitter DB. I have this database on machine and I want to work, I want to issue commands, I want to modify or I want to access this database. So whenever I will issue any command without choosing any database to work on, my commands will not execute. Okay, so in order to choose or in order to work on a database, you need to select a database for using. So उसके लिए आपको command क्या लिखना है? Use and database name. So I want to work with database Twitter DB. Okay. So now I will get a message reading table information for completion of table and so on. And you can turn off this feature and you will get a message database changed. So now I have got this message. That means I am ready to work on this Twitter database. Okay. मैं अब Twitter database को access कर सकता हूँ. अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं नहीं कर पाता. Now whatever command I will issue, all those commands will be issued by the MySQL database server over this database. अगर मैं कोई भी क्वेरी इशू करूंगा इसी डेटाबेस पर रन होगी वो क्वेरी, ध्यान रखना है. थोड़ी देर बाद हो सकता है आप चाहते कि नहीं मैं इस डेटाबेस के साथ काम करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी डेटा. सो व्हाट यू विल डू, अगेन चेंज द डेटाबेस, यूज university_db. So again my database is changed. Now let's see how to see the set of tables in my database. So I just write show tables command. So with the help of show tables command, I will be able to see all list of all the tables in the database. कौन से database में? I have which database I have selected? University and actually indicates how many tables are there or how many records are there in my query. So this is the list of all the tables that I have in this database. Note कर लिया होगा query. Now this is the command that will use to see list of all the MySQL users that you have. Again ध्यान रखना इस कमांड को इशू करने के लिए you will require MySQL administrative level privilege. So since my account have administrative level privilege, I can issue this command. Okay, so actually एक डेटाबेस सर्वर पर जितने भी यूजर अकाउंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन MySQL जो डेटाबेस बना हुआ है ऑलरेडी, मैंने कहा ना दिस इज अ सिस्टम डेटाबेस. यू सी this MySQL database, it is a system database. So this database also have lot of tables. So one of the tables is user table, and this table contains all the information regarding users. Okay, so by just accessing this database you can you can see the list of the users in your database. So let me issue this command. I'm just copying so that I will not require any kind of typing. Now what do you say, my command will be successful or not? Sorry, typing में कुछ error. Why this is error? Actually database is trying to issue this command on this database university DB because I have selected this database for work. Okay, university DB I have changed it, है ना? So MySQL is trying to run this command on this database. Now there is no user kind of table there in this database. Okay, so I have to change my database for working. तो वर्किंग डेटाबेस आपको चेंज करना है, सो आप लिखेंगे यूज MySQL. ठीक है, now the database is changed and now I can issue this command. Okay, sorry, select star from MySQL.user. Okay, 1 minute. So tables, let me see the list of the tables. If MySQL user table is there, yes, 1 minute. Select star from user.
This is the user table. So now I need to see this. I need to access this column actually. So in place of star, I will just write select user. Okay. So these are the list of users that I am having. Okay. So मैंने क्या किया है? There is a column with name user. So इस user column में I already know that कि इस column में users की list होती है. ठीक है, बहुत सारे columns हैं. You see these are the list of columns: host, user, select privilege, insert privilege, and so on. Okay. So this is a very large table, but I am interested in just knowing user. Okay, name of the user. So I just selected this column only. Select user from user. Okay, I have not discussed what is the select command. For the time being, you just remember this command. Okay, select clause के बारे में we will talk about later. ये command कैसे बनी, क्या है, you will understand it later. For the time being, just remember, if I want to retrieve the name of the users, you can use this command. Okay, select user from user. So user is the name of the command table actually. It is the name of the table. This is the name of the column. So I've just selected all the columns, and you know that username are unique, so there will be no repetition. So app developer, that is an account. Asoka, that I have created. Nemi, Ravi, these are the accounts. So these are the actually system account. App developer, app designer. These are the accounts that are, some accounts I have added. These are the system accounts, including these ones. Okay, and this is also system account. I guess these accounts I have created. Okay, I'm not remembering. पहले मैंने किए होंगे. So you just see आपको कौन कौन से अकाउंट्स कॉमन दिखाई देते हैं. देयर विल बी सिस्टम अकाउंट्स, वो आपकी टेबल में दिखाई देंगे, मेरी भी टेबल में दिखाई देंगे. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इसमें से कौन कौन से सिस्टम अकाउंट्स हैं. मैं इनके बारे में कंफर्म हूँ. दीज आर द सिस्टम अकाउंट्स. ये मुझे नहीं क्रिएट करना पड़ेगा. इनके बारे में कंफर्म नहीं हूँ. आई गेस मुझे ये मैंने क्रिएट किए हुए हैं. ओके, let's come back to again University DB. Okay, this is database change. Tables. इतना समझ में आ गया? If you have any doubt, you can ask. ये कमांड्स के बारे में बाद में बात करेंगे. These are the systems related, so that are not very useful. Now one more thing. If you want to see the structure of the table, there is a one more command, describe command. So short में हम DESC लिखते हैं. DESC. Let's say you want to see what are the set of columns in this table. Let's say student table में क्या क्या columns हैं. So DESC STUDENT. So you will see that this command will describe the table's structure. So you see that these are the fields. Fields mean columns. So this table, student table, have 4 columns. First column is ID, name, department name, and total credit. These are the data types: varchar 5, varchar 20, varchar 20, decimal 30. So these are the data types of these columns. ID is a varchar. That means it is a variable length string of 5. Name is a variable length string of 20 characters maximum. Okay, it is a department name is of length 20. So varchar और ये सब data types के बारे में बाद में बात करेंगे. Okay, these are the information related to constraints. कि null constraints किस पर लगा हुआ है. We have already talked about integrity constraints. That is null constraint or not null constraint. So here null means no. That means no null value will be allowed in this column. This is also no. That means name will also cannot be null. Name cannot be null. Yes, here it is written yes. That means department name can be null. You can leave this value empty. And total credit can also be null. Key. This is a primary key, and department name is actually foreign key. Okay, so that's why I'm and default values we will talk about later. Default is a kind of constraint that you can try, and this is extra, so that is empty. Some other information may be there. So 4 is written because there are 4 columns. Okay,
you can also write this command in this way also, describe. Okay, so describe is the full command and desc is the shortcut command for this. Okay, uh, data type we will discuss later. Now one task you also need to do, you can take a screenshot of this column, this slide. Okay, I will also share the slides, but if it will be great if you take the screenshot of this table, this slide. Okay, now why this I'm talking about this slide, and I am saying you to take the screenshot of the slide. This is because this slide show you how to run a SQL script. So actually I will share you a set of SQL files with .sql extension that contains a set of tables and databases. Okay, and actually those set of databases, sorry, that set of tables and their data is written in SQL query form. So you can run those SQL command to automatically create a database in your machine, and that database will also be automatically populated. Okay, so what you just need to do, MySQL में login में आप किसी account में नहीं जाना है, just simply you will just write with, if you are using a account then you will use source file name or dot file name. ठीक है, so you have then so what you will do first, just using cd command you will go into document folder and then वहां पर आप MySQL में लॉगिन कर लेंगे. ओके, तो दैट मीन्स आपका जो टर्मिनल की जो करंट डायरेक्टरी है योर डॉक्यूमेंट है. एंड अगेन अब आपको सिंपली क्या करना है, लेट मी शो यू बाय दिस. तो सपोज आपको आपने क्या किया, आपका जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट्स नाम से फोल्डर है, इसमें आपने वो फाइल कॉपी कर दी है. मैं आई विल शेयर दोज फाइल्स विद यू डॉट एसक्यूएल एक्सटेंशन के साथ. तो आप वो फाइल को यहाँ कॉपी कर देंगे डॉट एसक्यूएल में. एंड नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट यूज cd कमांड, cd डॉक्यूमेंट्स, इतना ही टाइप करिए और टैब प्रेस कर दीजिए, अपने आप ले लेगा एंटर. एंड ls command will show you all the list of the files, so you can confirm that you are in the document folder only. Okay, now what you just need to do, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है MySQL में. ओके, जैसे मैंने आपको बताया, लॉगिन करने के बाद जब वंस यू गेट द MySQL prompt, you just need to run this command, source space and name of the file and semicolon. ठीक है, सो मैं आपको ये बता दूंगा ऑफलाइन क्लास में भी आपको, अगर आपको कोई दिक्कत आती है देन so I will share the name of the file. So what you just need to write in this prompt, just write source and name of the file. Let's say abc.sql है, तो abc.sql आप लिख देंगे, abc.sql. Okay, since I don't have any file, so I will get an error message because the file is not there. But if you have the file in your current directory, that file will be starting executing. Okay, I will tell you the procedure to execute this command. So उससे क्या होगा कि आपके डेटाबेस में ऑटोमेटिकली एक यूनिवर्सिटी डीबी क्रिएट हो जाएगा एंड उसमें डेटा भी पॉपुलेट करने के लिए एक और एसक्यूएल फाइल है, आप उसे भी एग्जीक्यूट कर देंगे. और आपके जब फाइल्स पॉपुलेट हो जाएंगे, फाइल्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी सक्सेसफुली, देन यू विल हैव अ डेटाबेस दैट इज रेडीमेड इन योर मशीन, जिसमें स्टार्ट ऑफ जो आपकी बुक में जो टेबल्स हैं, टेक्स्ट बुक्स की टेबल्स हैं, वो टेबल्स विल बी देयर एंड सम डेटा विल बी देयर आल्सो देयर, and there, so that you can run and see the output of the queries that have been given in your book actually. So book की मदद में जो कुछ भी आप बुक के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे. so मैं वो आपको फाइल्स आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है,
Still you face some difficulty to execute your file, so you can ask, you can discuss with me on Monday. Okay, so now let's close for today. I think this much is enough, and now you need to, okay, one more thing. If you want to exit from the MySQL, you can use exit command. Okay, there is also one more command, quit. आप quit भी कर सकते हैं. Okay, so prompt भी बंद हो जाता है exit command से. So I have closed my MySQL application. Okay, so now let's close here. Now if you have any query, you can ask, query or confusion. मैं वो files जो हैं, I will share those files with you on your WhatsApp. Okay, and you can download those files there. एंड जो फाइल्स का ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में मैं शेयर करूंगा उसी ऑर्डर में आपको करना है, क्योंकि उसमें दो तरीके के फाइल्स होंगे. यू विल हैव टू काइंड ऑफ फाइल. वन फाइल इज फॉर क्रिएटिंग सेट ऑफ टेबल्स. तो पहले आप सेट ऑफ टेबल्स वाली फाइल को रन करेंगे, एंड देन डेटाबेस को पॉपुलेट करने के लिए जो फाइल है उससे एग्जीक्यूट करेंगे. उसमें टाइम लगेगा, 1 घंटे के समथिंग लगेगा आपको, आधा से 1 घंटा, डिपेंडिंग ऑन स्पीड ऑफ योर मशीन एंड लोड ऑन योर मशीन. ओके, सो बियर विद दैट. इंतजार करना है, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि सिस्टम हैंग हो गया, कुछ हो नहीं रहा है और बहुत सारा काम चल रहा है एंड ये रुक ही नहीं रहा है, कब रुकेगा. तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, एंड योर डेटाबेस विल बी क्रिएटेड. ओके, सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क. हाँ होगा, ओब्वियसली होगा. जब आप रियल डेटाबेस बनाएंगे तो डेटाबेस होंगे आपके डेटाबेस में. आपके डेटाबेस में थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एक ही डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन उनको अलग अलग प्रिविलेज आपको देना होगी. तो ये डेटाबेस में मैंने बताया ना कि हम एक्सेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं. तो एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, जिस यूजर को जिस काम को करना चाहिए वही करेगा. दैट मीन्स वी विल अलाउ रोल बेस्ड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. जिसका जैसा रोल है उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन एक्सेस मिलेगा. जैसे स्टूडेंट को केवल स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का एक्सेस आपको देना है, तो वो आप रोल से क्रिएट करके करते हैं. तो हम रोल के बारे में बाद में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट रोल लेटर. ओके, सो हर यूजर का एक रोल होता है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक इज अ रोल एक्चुअली. तो यू कैन हैव मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स जिनके पास सेम कैपेबिलिटी होगी. सिमिलरली कुछ यूजर्स होंगे जो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स होंगे, उनके पास कम कैपेबिलिटी होगी. तो आपके सिस्टम में थाउजेंड ऑफ यूजर्स मे बी देयर विद डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पावर्स. हो सिंपल टर्म में आप पावर कह सकते हैं, प्रिविलेजेस बोलते हैं. टेक्निकल टर्म इज प्रिविलेजेस, बट अगर आप नॉन टेक्निकल टर्म में, सिंपल टर्म में समझना चाहते हैं तो पावर, काम करने के जो पावर है, अथॉरिटी, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी लेवल विल बी देयर फॉर डिफरेंट यूजर्स. और थाउजेंड ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं, और दो यूजर ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास सेम अथॉरिटी है. ओके, थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करिए. इफ यू फील देयर इज एनी डाउट, यू कैन आस्क ऑन मंडे. आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, इंस्टॉलेशन करिए, एंड जो मैंने बताया है ये भी करिए. और मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप रिविजिट कर सकते हैं वीडियो को. ओके, हालांकि विंडोज के लिए, जो लोग विंडोज यूज करते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, विंडोज में माइस्क्वेल का इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है. ओके, आप किसी भी कहीं भी गूगल करिए, आपको इंस्टॉलेशन प्रोसीजर आसानी से मिल जाएगी. ओके, और माइस्क्वेल में दो वर्जन आते हैं. आपको कम्युनिटी सर्वर वाला वर्जन डाउनलोड करना है, जो ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है. इसके बारे में मैं बताऊंगा कुछ समय बाद इंट्रोडक्शन के में, लेकिन पहले मैं, एमएस एक्सेस क्या होता है सर? एमएस एमएस एक्सेस क्या एक्सेस होता है सर? अलग डेटाबेस है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था. ओके माइक्रोसॉफ्ट सर. एक्सेस जो आपका ऑफिस में आता है, तो वो ज्यादा पावरफुल डेटाबेस नहीं है. वो आरडीबीएमएस की कई सारी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट ही नहीं करता है. तो वो प्रोफेशनल डेटाबेस नहीं है. बहुत वाइड, तो आप वेब सर्वर बनाने के लिए वो डेटाबेस इस्तेमाल नहीं कर सकते. MySQL इज मोर प्रोफेशनल एंड वाइडली यूज डेटाबेस. जो आप देखेंगे तो इंटरनेट में लगभग 70% सर्वर्स जो है MySQL पर रन करते हैं. ओके, तो MySQL बहुत ब्रॉड वाइडली यूज डेटाबेस है. और एक और चीज याद रखना है, MySQL ओपन सोर्स है,
बट इसका कॉपीराइट प्रोप्राइटरी राइट है वो माई ओरेकल के पास है। मैं इस पर बात करूंगा बाद में, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट ऑन दिस ऑल्सो, क्योंकि माइस्क्वेल जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी को ओरेकल ने टेक ओवर कर रखा है। एंड माइस्क्वेल चूंकि जीपी लाइसेंस के अंडर आता है, फ्री ओपन सोर्स लाइसेंस में, तो स्टिल माइस्क्वेल इज ओपन सोर्स। ओरेकल ने उसको नॉन प्रोप्राइटरी नहीं बनाया है और बनाई भी नहीं सकते, क्योंकि माइस्क्वेल का जो इनिशियली लाइसेंस था वो जीपीएल ही है, और जीपीएल लाइसेंस की बाउंडेशन है कि आप उसे प्रोप्राइटरी नहीं कर सकते, जीपीएल में ही रहेगा। आप भी कुछ भी उसमें चेंज करेंगे माइस्क्वेल के अंदर तो आप उसे क्लेम नहीं कर सकते कि ये प्रोप्राइटरी है। लाइसेंस के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एक्सप्लोर व्हाट इज जीपीएल लाइसेंस। GNU आपने सुना होगा, GNU एंड जीपीएल दो लाइसेंस हैं, ओपन सोर्स कैटेगरी में इस्तेमाल होते हैं ये, ठीक है। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं इसी लाइसेंस में आते हैं। सो डिफरेंट लाइसेंस हैव डिफरेंट डिफरेंट टर्म कंडीशंस। सो ये मैंने बहुत सारी कंडीशंस हैं उसमें, मैंने जस्ट एक दो कंडीशंस आपको बताए हैं। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट? आप लेकिन जरूर करें, सब लोग अटेम्प्ट करें इंस्टॉलेशन, पहला काम तो इंस्टॉलेशन करें माइस्क्वेल का। हम्म, सबको करना है। और ये काम जो विंडोज यूज कर रहे हैं वो अपना विंडोज पे इंस्टॉल करें, जो माइस्क्वेल जो लिनक्स यूज करते हैं लिनक्स पर करें। और जो मैंने बताया है आज इतना कोशिश करें उतना प्रैक्टिकल कर लें, और आगे अगर कोई डाउट आता है इसमें कुछ तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो आज यहीं क्लोज करते हैं। कोई क्वेश्चन है स्टिल तो आप वो तब बता सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज द सेशन। नो?